In the bustling city of Windermere, hidden between the towering glass buildings and humming traffic, there stood a narrow alley where time seemed to pause. Windermere के मसरूफ शहर में ऊंची शीशे की इमारतों और गूंजती ट्रैफिक के दरमियान एक तंग गली छुपी हुई थी जहां वक्त जैसे थम जाता था. At the end of this alley was a tiny shop called Feathers and Fables. इस गली के आखिर में एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम Feathers and Fables था. Few people noticed it and even fewer dared to enter, for it was said the shopkeeper could bring paper to life. कुछ ही लोगों ने इसे देखा था और बहुत कम लोग इसमें दाखिल होने की हिम्मत करते थे क्योंकि कहा जाता था कि दुकानदार कागज में जान डाल सकता है. The shop belonged to an old man named Elias. ये दुकान एक बूढ़े शख्स की थी जिसका नाम एलियास था. He was a soft-spoken, peculiar figure who always wore a long velvet coat and had ink-stained fingers. वो एक धीमे लहजे वाला, अजीब सा इंसान था जो हमेशा एक लंबा मखमली कोट पहनता और इसकी उंगलियां स्याही से दागदार होते. His voice trembled with age, yet carried the warmth of forgotten stories. इसकी आवाज़ उम्र के बायस कांपती थी, लेकिन इसमें भूली बसरी कहानियों की गर्मी मौजूद थी. On dusty wooden shelves, his shop displayed delicate paper animals, foxes, owls, dragons, even a unicorn, each folded with uncanny precision. गैर-आलूद लकड़ी की शेल्फों पर इसकी दुकान में नाजुक कागजी जानवर रखे होते. लोमड़ियाँ, अलू, अजडे, हत्ता कि एक यूनिकॉर्न, हर एक हैरान कुन महारत से बनाया गया था. But one creation was never for sale, a paper sparrow, perched on a silver stand near the window. लेकिन एक तख्लीक कभी फरोख्त के लिए नहीं थी. एक कागजी चिड़िया जो खिड़की के करीब एक चांदी के स्टैंड पर बैठी थी. Children often pressed their faces against the glass to see it. बच्चे अक्सर इसे देखने के लिए शीशे से अपने चेहरे लगा देते. Some swore they saw it blink. कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने इसे पलक झपकते देखा. Others whispered it twitched its wings when no one was watching. दूसरों ने सरगोशी की कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो अपने परों को हिलाती है. One rainy afternoon, a girl named Mira entered the shop. एक बारिश वाले दोपहर को मीरा नामी एक लड़की दुकान में दाखिल हुई. She was 12, curious and tired of her city's digital noise. वो 12 साल की थी, तजस्सुस से भरपूर और शहर के डिजिटल शोर से थकी हुई. Something about the shop felt real, enchanted, even. दुकान में कुछ ऐसा था जो हकीकत सा लगा, बल्कि जादुई. Elias greeted her with a smile and offered her a cup of jasmine tea. एलियास ने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया और इसे चंबीली की चाय का कप पेश किया. They spoke about stories, loss, and how some things were too fragile to explain. उन्होंने कहानियों, खो जाने वाली चीज़ों और इन बातों पर बात की जो बहुत नाजुक होती हैं समझाने के लिए. I saw the sparrow move, मीरा whispered. मैंने चिड़िया को हरकत करते देखा, मीरा ने सरगोशी की. Elias didn't deny it. एलियास ने इसकी बात से इनकार नहीं किया. He leaned closer and said, "Every paper creature here is a memory folded into form. That sparrow is the last thing my sister ever gave me." वो करीब झुका और बोला, यहाँ हर कागजी मखलूक एक याददाश्त है जो शक्ल में ढली है. वो चिड़िया मेरी बहन की आखिरी निशानी है. He showed Myra an old tattered letter. इसने मेरा को एक पुराना फटा हुआ खत दिखाया. It was written by his sister before she vanished many years ago. ये खत उसकी बहन ने लिखा था कई साल पहले जब वो गायब हो गई थी. Inside the envelope was a sketch of a sparrow with the words, "Don't forget to fly, even when you feel torn." लिफाफे के अंदर एक चिड़िया की तस्वीर थी और साथ लिखा था, "उड़ना मत भूलना, चाहे तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो." Elias folded that letter into the sparrow, using a secret technique passed down in his family. एलियास ने वो खत एक चिड़िया में बदला अपने खानदान की खफिया तकनीक इस्तेमाल करते हुए. But over time, his hands grew stiff and the magic dimmed. लेकिन वक्त के साथ इसके हाथ सख्त हो गए और जादू मुदम हो गया. He feared that when he passed, the sparrow's wings would never flutter again. इसे डर था कि जब वो चला जाएगा, चिड़िया के पर दोबारा कभी नहीं फड़फड़ाएंगे. Mira, who had a talent for origami
and a heart full of empathy, asked Elias to teach her. मेरा, जिसे ओरिगामी में महारत थी और दिल में हमदर्दी भरी थी, उसने एलियास से सीखने की दरख्वास्त की. Weeks passed. Under candlelight, Elias showed her folds that required not only skill, but intention, a belief that stories deserve to breathe. हफ्ते गुजर गए. मोमबत्ती की रोशनी में एलियास ने इसे ऐसे फूल सिखाए जो सिर्फ महारत ही नहीं बल्कि नीयत भी मांगते थे. ये यकीन कि कहानियां सांस लेने की मुस्तहिक हैं. One night, while practicing alone, Mira folded a tiny fox. एक रात अकेले मशक करते हुए मीरा ने एक छोटा सा लोमड़ी का मॉडल बनाया. To her astonishment, it blinked. इसके हैरत से उसने पलक झपकाई. She gasped but smiled. वो चौंकी मगर मुस्कुराई. She returned the next day to share the miracle with Elias, but the shop was silent. अगले दिन वो ये माजज़ा इलियास से बांटने आई, लेकिन दुकान खामोश थी. On the counter lay his velvet coat and a note. काउंटर पर इसका मखमली कोट और एक नोट रखा था. The stories are yours now. Keep folding. Keep flying. अब कहानियां तुम्हारी हैं. Fold करते रहो, उड़ते रहो. Mira placed the paper sparrow gently on her shoulder. Mira ने कागजी चड़िया को नरमी से अपने कंधे पर रखा. It fluttered once, then again. वो एक बार फड़फड़ाई, फिर दोबारा. Outside, the city rushed on, unaware that something magical had just changed hands. बाहर शहर अपनी रफ्तार से चलता रहा, बेखबर के कुछ जादुई अब किसी और के हाथ में आ चुका है. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें. इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. The Paper Sparrow. In the bustling city of Windmere, hidden between the towering glass buildings and humming traffic, there stood a narrow alley where time seemed to pause. At the end of this alley was a tiny shop called Feathers and Fables. Few people noticed it, and even fewer dared to enter, for it was said the shopkeeper could bring paper to life. The shop belonged to an old man named Elias. He was a soft-spoken, peculiar figure who always wore a long velvet coat and had ink-stained fingers. His voice trembled with age, yet carried the warmth of forgotten stories. On dusty wooden shelves, his shop displayed delicate paper animals, foxes, owls, dragons, even a unicorn, each folded with uncanny precision. But one creation was never for sale, a paper sparrow, perched on a silver stand near the window. Children often pressed their faces against the glass to see it. Some swore they saw it blink. Others whispered it twitched its wings when no one was watching. One rainy afternoon, a girl named Mira entered the shop. She was 12, curious, and tired of her city's digital noise. Something about the shop felt real, enchanted even. Elias greeted her with a smile and offered her a cup of jasmine tea. They spoke about stories, loss, and how some things were too fragile to explain. "I saw the sparrow move," Mira whispered. Elias didn't deny it. He leaned closer and said, "Every paper creature here is a memory folded into form. That sparrow is the last thing my sister ever gave me." He showed Mira an old, tattered letter. It was written by his sister before she vanished many years ago. Inside the envelope was a sketch of a sparrow with the words, "Don't forget to fly, even when you feel torn." Elias folded that letter into the sparrow using a secret technique passed down in his family. But over time, his hands grew stiff, and the magic dimmed. He feared that when he passed, the sparrow's wings would never flutter again. Mira, who had a talent for origami and a heart full of empathy, asked Elias to teach her. Weeks passed. Under candlelight, Elias showed her folds that required not only skill but intention, a belief that stories deserve to breathe. One night, while practicing alone, Mira folded a tiny fox. To her astonishment, it blinked. She gasped but smiled. She returned the next day to share the miracle with Elias, but the shop was silent. On the counter lay his velvet coat and a note. "The stories are yours now. Keep folding. Keep flying." Mira placed the paper sparrow gently on her shoulder. It fluttered once, then again. Outside, the city rushed on, unaware that something magical had just changed hands. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अब तक हमारे साथ रहे. अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी.